You have muted. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. This link is not working, so we will directly write here download Arduino. Windows, we want to download. Yes, it's written E, but we can go with this also. Maybe there is some error in that link. Where we have an error? Where is the link to download it? So here are two option code, online or get started. So as in books it's given, you can either use it online. So when you will click online, you will be able to see online interface or Arduino. No need to download. You can work online platform also. Okay, so here you have to give your user ID and password, then it will work. So first of all, we have to sign up, then we have to log in. Okay? And you all know how to sign up and log in. So from this link, you can do yourself. Everything is given about this Arduino here. Like how you can start and how you can log in and start. ओके जैसे कि आप अपने फ़ोन में गेम्स डाउनलोड करते हो ना, उसके लिए भी आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. ठीक है, पहले साइन अप करते हो, फिर साइन इन करते हो. इन सेम वे आर्डिनो भी आपका एक तरह से गेम है, सॉफ्टवेयर गेम है, जिसमें आप अपने डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स आप डिजाइन कर सकते हो. तो फ्रॉम दिस लिंक यू कैन डाउनलोड और यू कैन जस्ट वर्क ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू sign up, then with the same ID you have to sign in. Okay, and where is the link to download it? I'm not able to find that one. Software, there is no option. Okay, this one, Windows app 10. Anyone want to contribute? Then do it from your system. I just want to download. That was dollar, not paisa. As you can see, this one is free to download, so you can download it very, very easily. Internet is working slow today, right? We'll close this extra tab. Why it's not getting download? What happened? No need to see. It's already updated one.
No, that's not the issue. Due to network issues happening. Okay, it's not getting download. I think we will skip this part, or someday else I will share my system screen and show you how we can download it. Okay, so we will continue with the book part. So we will skip this part. You can download it. It's very easy, and I will show you from my system one day. Okay, how we can download it. So first of all, this is the interface. So whenever you will download Arduino into your system, you will be able to see interface like this. Okay. So first of all, in each and every application, we have this menu bar from where you have all the options related to your that particular application or particular software. So one by one, we will discuss each and every one. So first one we have menu bar. So menu bar gives you access to the tools needed for creating and saving Arduino sketches. Means जो भी आप डिजाइन बनाओगे अपने सर्किट का, अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट कुछ डिजाइन करने जा रहे हो, बिफोर क्रिएशन यू मस्ट prepare one sketch. Okay, and for doing all the operation on that sketch we have this menu bar. All the tools related to your Arduino project will be available under this menu bar. Next we have verify button. Verify button means जैसे कि अगर आप प्रोग्रामिंग जावा में करते हो या फिर पाइथन में करते हो या फिर HTML में, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले आपका कंपाइल होता है. Now what is the meaning of compilation? What is the meaning of compile? Who wants to tell what is the meaning of compile or compilation? What to compile? What is the meaning of compile? Aditya wants to tell. Anyone, what is the meaning of compilation? You have learned HTML, you have learned JavaScript, you have learned Python, and still you don't know what is the meaning of compilation or interpretation or translation. If you are writing any program in computer, you always using what language? High level language, right? It's very similar to your English language, as you all know. But computer cannot understand this high level language. Computer can understand only which language? Binary language, or we can say machine language or low level language. Computer can understand only this language. This is one language only. Names are different. Binary, machine or low level language. So whenever you are writing your program, either in HTML or in Python, in any high level languages, you have to compile or interpret your program before execution. Because compilation means it's converting your program from high level language to low level language, as well as it's finding the error in your code. So when you run your program, you see there is some error, और अगर error होता है वो execute नहीं होता. So that is the main purpose of compilation and interpretation, कि आपके लिए जो code लिखा है high level language को, first that will convert into low level language, as well as it will find out the error in your code. Okay, so in this Arduino we have this verify button. So what is the purpose of this verify button? Compiles your code and check for errors in spelling or syntax. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका कंपाइल करेगा. कंपाइल मीन्स आपने जो भी कोड लिखा है उसको वन बाय वन रीड करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा, और कन्वर्जन के टाइम अगर उसे लगता है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है या कहीं सिंटेक्स मिस्टेक है, तो उसको आपको नोटिफिकेशन आएगा कि देयर इज सम एरर. तब आप उसको करेक्ट करोगे, देन ओनली योर कोड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट. इज इट क्लियर? नाउ इट्स क्लियर कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन. Okay, so have you heard about compiler or interpreter in 6th standard, first chapter, computer languages? Anyone heard about compiler or interpreter?
पढ़ा गया आपने पिछली क्लासों में? हाँ, compiler and interpreter, what is the difference between both of these? Seriously, don't know anyone? Both are translator used to convert high level language to low level language, but difference is compiler will translate the whole program in one session, whereas interpreter will convert one line at a time. मीन्स जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है दोनों हमारे एक ही काम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं, बट जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ उठाता है, उसको कन्वर्ट करता है और फिर आपको रिजल्ट देता है। बट इंटरप्रेटर एक टाइम पे एक लाइन कन्वर्ट करेगा, अगर उस लाइन में एरर है तो आपको पहले वो करेक्ट करना पड़ेगा, देन इट विल चेक फॉर द अनदर लाइन। ओके, इज इट क्लियर? कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। Next we have upload button. Now what is the meaning of upload button? It's very simple, as you use on daily basis. Upload and download, what is the difference between these terms? Download something, then upload means upload something, right? Very simple. Then why I'm asking from you if it is very simple? Download means download karna, upload means upload karna. Yes, anyone else who wants to tell difference between upload and download? अगर आप किसी भी वेबसाइट से कुछ कंटेंट अपने लिए यूज कर रहे हो, मीन्स उनके वहां से डेटा उठा के आप अपने सिस्टम पे सेव कर रहे हो, दैट इज नोन एज डाउनलोड। और जब आप अपना कंटेंट उनकी साइट पे लोड कर रहे हो, दैट इज नोन एज अपलोड। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपलोड एंड डाउनलोड। जब आप उनकी कंटेंट पे कुछ शेयर करते हो या कुछ कंटेंट उनको देते हो, दैट इज अपलोड। जब आप किसी और की साइट से कंटेंट उठाते हो, दैट इज योर डाउनलोड। Okay, so next is your upload button. Send the code to the board that is connected. Means आपने जो कोड लिखा वो बोर्ड पे सेंड हो रहा है, that means upload हो रहा है। Arduino Uno in our case, क्योंकि हम यहाँ पे Arduino Uno ही यूज कर रहे हैं, that's why we are sending our code to this board. The lights on the board will blink rapidly while uploading. Means जैसे ही आपको पता चलेगा जो LEDs लगी हुई हैं, जो लाइट्स लगी हुई हैं, ब्लिंक करेंगे कि डेटा आपका अपलोड हो रहा है। क्लियर? Next we have new sketch. Who will tell about this? We have read this thing yesterday, but no one was aware that time. To open new sketch, for creating new sketch. Okay, so as its name says itself, open up a new window containing a blank sketch. It's very simple. Next, sketch name. If you want to save your already existing or new one created sketch, then you have to use this option for saving your sketch. Next, open existing sketch. अगर already कोई sketch बना हुआ है आपको उसको open करना है, for that we have this option. So everything is given here. Next is save sketch. You know why we are using this. Then serial monitor. When the board is connected, this will display the serial information of your Arduino. अब हो सकता है कि आपने अपने Arduino सॉफ्टवेयर को एक टाइम पे मल्टीपल सिस्टम्स पे कनेक्ट किया है, तो सीरियल कनेक्टर आपके लिए क्या काम आएगा कि आपने एक टाइम पे इसको किस बोर्ड पे कनेक्ट किया है। फ्रॉम सीरियल नंबर यू कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग कि आपको किस बोर्ड पे अभी आपका प्रोग्राम अपलोड करना है। नेक्स्ट इज कोड एरिया। तो ये जो आपका व्हाइट एरिया, दिस इज योर कोड एरिया, जहां आप अपना कोड लिखोगे। द एरिया इज वेयर यू कंपोज योर कोड ऑफ स्केच दैट टेल्स द बोर्ड व्हाट टू डू। नेक्स्ट इज, वन सेकेंड, next is message area. This area tells you the status of saving, code compiling, errors and more. मीन जब भी आप कुछ कोड कंपाइल करोगे या फिर अगर आप सेव कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ आएगी? कोड एरिया, मैसेज एरिया में, सॉरी। नेक्स्ट इज टेक्स्ट कंसोल, shows the details of error message, size of your program was compiled and additional information. And the last one is board and serial port. Tells you about the whiteboard is being used and what serial port is connected to. In Arduino IDE, you can see a tab
called sketch with two different Arduino function, the setup and the loop. Now tell me what is the meaning of function? In class 6, in class 7, you have heard about these functions and you have created also in JavaScript. Now what is the meaning of functions? That is attribute. Functions. Have you heard about functions? Where? In JavaScript. Then why we are using this function and what is the purpose of using function? आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा भी है कि लास्ट क्लासेस में, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 8 में डायरेक्ट? 6-7 में कंप्यूटर पढ़ा था या नहीं किसी ने? ना आप कभी मेमोरी के बारे में रिप्लाई करते हो, ना आपको फंक्शंस का पता है, ना आपको अपलोड डाउनलोड का पता है, ना आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर का पता है, बेसिक ही नहीं पता, आप पहले रोबोटिक्स पढ़ने जा रहे हो। अगर नहीं पता तो फाइंड आउट करो, पढ़ो उसको, डाउट पूछो, कुछ पूछते भी नहीं हो, कुछ बताते भी नहीं हो, बस आ जाते हो, बैठ जाते हो क्लास में। ऐसे सीखोगे कंप्यूटर? बस सबको यही लगता है कि अरे बस लास्ट लेक्चर आ गया और अपने सपने देखना शुरू कर देते हो, फ्री हो जाएंगे, फिर घर जाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, है ना? पढ़ते तो हो ही नहीं इस क्लास में। बस अब थम्स अप भेज दो, ये सब खुश हो गए सब ये बात सुन के कि मैम सही बोल रहे हैं आज तो, है ना? Yes, what is the meaning of function? Neha, you have to tell me, no need to send thumbs down. Ayan, what is the meaning of function and why we are using this function in each and every language? We are using this thing in each and every programming language. And why we are using? So this thing you have to find out. Today you have to learn about functions. Okay? Today you have to learn about functions in depth. Tomorrow first I will ask this question, then we will continue with the chapter reading. No, I will teach you. But after punishment, I will teach you. By clicking on the preferences option in file menu, you can change the IDE preference such as language of the application, sketchbook location, path for saving Arduino programs, and add additional third-party bots to IDE. ठीक है, अगर आप प्रेफरेंसेस ऑप्शन में जाओगे फाइल मेन्यू में तो आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो या फिर जो बाय डिफॉल्ट सेविंग लोकेशन है उसको भी चेंज कर सकते हो. So next is connecting Arduino Uno to the computer. तो अगर आपने Arduino Uno को कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर पे तो कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास.